Reading is fun. What are the things that Munna like to do? मुन्ना लाइक टू प्ले एंड प्ले फुटबॉल मेजरली, और जो भी खेत खोल के आइटम्स है वो उनको पसंद थे। मैं सिर्फ आपको ओरली बता रही हूँ, आप सिर्फ समझ जाइए, फिर मैं लिखवाती हूँ आपको। व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे? भैया जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग। वो अपने बुक्स रीड करते थे और आशा करते थे कि मुन्ना भी एक दिन बैठे उनके साथ और पढ़े। वाई वॉज मुन्ना सो हैप्पी विद द टाइम टेबल अबाउट दैट भैया मेड फॉर हिम? तो वो खुश तो हुए, लेकिन वो बोले कि मुझे खेलना कब है, राइट? क्योंकि सब पढ़ाई की बातें हो रही थी, तो इसलिए वो अनहैप्पी थे, क्योंकि अब सिर्फ उसमें पढ़ाई थी और खेल कूद का बिल्कुल भी कुछ जिक्र नहीं था। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट? क्योंकि वो भैया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और ये समझते थे कि अगर मैं भी खेल कूद सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई पे ध्यान देना मेरा प्रथम ड्यूटी है। हुज कैरेक्टर डू यू थिंक मोर, मुन्ना और भैयास? वाई? मुझे भैया का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आप हो, कहीं ना कहीं मैं हूँ, जो पूरे कश लगा देते हैं हमारे भाई बहन ऊपर आए, अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी किस्मत उनके हाथ होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई उनके हाथ होती है, उनके चॉइसेस उनके हाथ में होते हैं। सो लेट्स टॉक। डू यू हैव टाइम टेबल एट स्कूल? हाँ, डू वी हैव? हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी इन वन वीक? यस। तो देखिए, इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, गेम्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस एंड अदर एक्टिविटीज़ भी है। नाउ मेक योर टाइम टेबल ऑफ योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडीज़। तो 71 पेज यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। यहाँ देखिए, क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स गिवन टू यू। लेटर्स टू फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स आर रिटन इन द सेम वे। तो आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, कोलकाता, रेडी 10th July 2000. My dear Ma, written address, date, greeting. This is my first letter after summer vacations, and we started our classes. And the day when we reached our hostel, तो क्या हुआ था वहाँ पे? I had settled down. सब अच्छा अच्छा लिख रहे ताकि मम्मी डैडी को टेंशन ना हो। इंट्रोडक्शन दिया है हमने। वी हैव न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्ले। वी देन पेंट देम, दे लुक सो रियल। बॉडी क्या है? वी हैव एन इंटरनल स्कूल हाउस पोएट्री रेसिटेशन अमॉन्ग अस up in the August, so I am really excited about it. It is a long poem, but we learned it again together with our teacher. It is nice to be back to school with our friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandma and grandfather. Ending, closing. Do write back soon. Your loving son Pratap. पेज नंबर हमारा 72 यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे। आफ्टर रीडिंग द लेसन अ लेटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द लेटर? प्रताप हैज़ रिटन द लेटर। देखिए, है ना। फिर टू होम, टू मम्मा लिखा था, माँ लिखा था। वेयर डिवोइस द रिटन, वेयर इज़ द राइटर? वो स्कूल पे है। What is the name of the hostel? Krishna. On which date it was written? तो written कौन से डेट पे था? 10 July 2000. Now write a letter to your friend relative in another city, telling him or her about the activities in your school. Follow the pattern and above letter. तो जैसे नीचे दिया है वैसे ही आपको यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में, एड्रेस अपने स्कूल का होगा, वैसे आपको लिखना है।
चलिए कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. इसमें है Oliver was a 9-year-old boy. He lived with her other homeless boys in an orphan. He was pale and thin and was very were were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Humble, was a cruel man and he ill treated the boys. The boys were also hungry. If it was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master to open master for more soup, but who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. It it soon disappeared. The boys whispered to one another. The boy pushed Oliver to little, or Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master and with his bowl and spoon in his hand and said trembling, "Please, sir, I want some more." Why did Oliver live in the orphanage? Oliver was a 9-year-old boy. He was with the homeless boys. So he lived in a orphanage. Who was Mr. Humble, who used to take care of the orphanage? What meals were the boys given? A soup. And it was very watery soup. What did Oliver say? Oliver said to Mr. Bumble that please give me soup, I want more. Boys are given 3 meals a day. Then why were they hungry? Because soup was, because the older boys drank, no, because the soup they were given was never enough. Never enough, and it was very watery. So 74 page is done here. Let's see the next page. Fill in the words from the passage and then means. That say very hungry means they wanted food. To eat, to vanish means to disappear. All the boys assembled in the stone where the word assemble means to be collected. Okay, so they worked together. They were all collected there. From the word assembled, remove the 2 words, add 1 word and the school and the whole school gathers. Assembly. Give me a suitable title to the passage. The bold, the beautiful. Hungry stomach makes you do anything. Cook up stories. So any word you can write. आप कुछ भी लिख सकती हो, क्योंकि वो भूखे थे तो उन्होंने उनका जो डर था उस पे हावी हुए. डर के आगे जीत है. जाके पूछ के आए. तो मॉरल यही है. टाइटल आप कुछ भी दे सकती हो, जैसे डू और डेयर, ईट और डेयर. तो टू लर्न मीन्स अंडरस्टैंड, टू गेन मीन्स नॉलेज, टू टीच means to show how or explain. Complete the following sentence using the correct form of teach and letter. We will teach will you teach me chess? Mr. Sharma taught class 8. The students have dash about road safety. Taught. My sister has
teach me how to read, taught me to read, ride a horse. I have dashed some of the customs of, I have learned some customs. Have, I learned how to cycle when I have just swore in the, I learned. So 75 is done. Page number, next page. Choose the correct word from the complete paragraph. All the class 5 students of our school were gathering in the front of the principal's office. They were going for the inter-school race. The bus arrived and they left for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners took their position. The dash blew the whistle. One student of our school ran fast and dash came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. Read the following sentence. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of time. Munna was flying kites and since morning from the time it was the past till the present. Fill in the blanks using for or since. I have lived in the house dash and I was a baby. This big jar has been in our family dash many years. The old banana trees in the village has been there. And last 200 they have been since the last 200 years. Nobody has seen him since yesterday. So all this project work is being done. So page number, unit 4 we finished, crying and my elder brother. So irrespective of our elders, हमने ये पार्ट में सीखा कि बच्चों हमने हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और एक लाइटर साइड देखना चाहिए उनकी तरफ, बच्चों को इंटरेक्शंस करने देना चाहिए पेरेंट्स के साथ और फीलिंग वर्ड्स के साथ बोलना चाहिए. प्रोजेक्ट वर्क जो दिया है वो आपको करना है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्योंकि आपको आगे बड़े क्लास में कन्वर्स करना है. तो बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि ग्रुप डिस्कशंस करो, अच्छे से बात करो. इसके साथ हमारा ये सेशन पेज नंबर 77 पे फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.